now we focus on the vector. एक अच्छा plasmid या एक अच्छा cosmid or a good bacteriophage, what are the prerequisites before it can be used for DNA recombinant technology? So let us understand the prerequisites of a good cloning vector, what are required for that. We know plasmids and bacteriophages. Plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within a bacterial cell independent of the bacterial DNA. प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाजेस बैक्टीरियल डीएनए के ऑपोजिट चलते हैं और खुद का रेप्लिकेशन करते हैं. Bacteriophages have a high number per cell and have a high copy number. तो एक बैक्टीरियोफाज जब एक बैक्टीरिया के अंदर जाता है, एक बैक्टीरियोफाज जब एक बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो बैक्टीरियल डीएनए को ब्रेक करके it produces lots of daughter bacteriophages. So that is called as a high copy number. The copy number is high of a bacteriophage. Plasmids may have 1 to 2 copies per cell. Plasmid is bacterial DNA and plasmid एक या दो कॉपीज बनाते हैं. So two copy numbers. So two copy numbers. Some plasmids have 15 to 20 copies per cell. तो कुछ plasmids ज्यादा number of copies बनाते हैं and their numbers can go even higher. So we use those plasmids which have a high copy number जिसका number ज्यादा हो सकता है. And let's see that. What are the features required to facilitate cloning in a vector? सबसे पहले origin of replication same होना चाहिए. It is a sequence from where the replication starts and any piece of DNA when linked to the sequence can be made to replicate with the host cell. तो सर एक बैक्टीरिया के अंदर उसका origin of replication होता है. That origin of replication is a sequence, say GATAC, and that is a sequence. Then the plasmid should have the same sequence GATAC, और उस sequence से the plasmid will start undergoing replication. तो जो बैक्टीरिया का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो ही रेप्लिकेशन का सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड में भी होना चाहिए. सो नंबर वन प्रायोरिटी, प्लाज्मिड शुड हैव द सेम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, द सेम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. Same sequence of nucleotides has to be there, which is the origin of bacterial replication and the origin of plasmid replication. And the sequence which is origin of replication is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. Origin से replication होता है plasmid का, और कितना उसका कॉपी नंबर बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो ओराई also controls the copy number. कॉपी नंबर कितना पॉसिबल है in the bacterial cell. If one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin supports a high copy number. तो समझो आपको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में डालना है, तो ऐसे प्लाज्मिड में डाले जिसका ओराई हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करके उतने सारे आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर सकता है. So those many gene of interest will come because of the copy number. Support a high copy number. Copy number ज्यादा होना चाहिए. So two things are important: the origin of replication.
the sequence of nucleotides, say GAAT, GAAT, ori of bacteria and ori of plasmid same hona chahiye. And if we are putting a gene of interest, this ori should support a high copy number. So high copy number so that you get multiple copies of gene of interest in the bacteria with the help of high copy number of plasmids. ये सबसे important origin of replication होता है. Next we need a selectable marker. एक selectable marker helps to identify and eliminate non-transformants and selectively permitting the growth of transformants. तो अगर एक प्लाज्मिड एक्सेप्ट हो जाता है, ओरिजिन सेम हो जाते हैं, एंड वी गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट प्लाज्मिड. तो multiple copies of that plasmid are obtained, then the plasmid has replicated in the bacteria, which means ori same hai and multiple copy numbers मिली है. This is called as a transformed bacteria. अभी आपको बाहर से कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो चुका है? How will you know that the plasmid is replicating inside the bacteria? उसका high copy number available है. You will use a selectable marker for that, which will help in identifying and permitting the growth of transformants. The genes encoding for resistance to antibiotics like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, or kanamycin are used as selectable markers for E. coli. They are used as selectable markers. A normal E. coli does not carry resistance against any of these antibiotics. तो एक नॉर्मल ई कोलाई के ऊपर अगर आपने एम्पिसिलिन डाल दिया, एम्पिसिलिन इज an antibiotic, the bacteria will die. Then the bacteria dies. Now you have a recombinant DNA bearing gene for resistance to antibiotic. Ampicillin is transferred into E. coli. So एक recombinant DNA डालेंगे which is gene for resistance to ampicillin. And what will then happen? The host E. coli becomes transformed into ampicillin resistant cell. And if we spread the transform cells on agar plates containing ampicillin, the transformants will grow and the untransformed recipient host cells will die. तो समझो आपने एक प्लाज्मिड डाल दिया एंड प्लाज्मिड के अंदर ओराई तो सेम है, it also has gene for ampicillin resistance. And gene for ampicillin resistance है, and समझो this ori is same as bacteria and multiple copy numbers of the plasmid are obtained. So in this case, 3 copy number बन गया, plasmid का 3 copy number बन गया. What does the plasmid have in it? Ampicillin resistance gene, ampicillin resistance gene, ampicillin resistance gene. That means now the bacteria has got transformed. Transformation हो चुका है. Now over it, if you put ampicillin, the bacteria will not die. The bacteria will survive because ampicillin resistance gene produces proteins which will resist ampicillin. So ampicillin resist हो चुका है because of ampicillin resistance gene. So a bacteria, if it does not accept the plasmid, plasmid accept नहीं होता है, then that is called as a non-transformant. Then that is a non-transformant. Means ori of the bacteria and plasmid match नहीं हुए, the plasmid did not multiply.
Now, if we put ampicillin, the bacteria will die. That is a non-transformant. But if the ori of the plasmid and bacteria match and the plasmid starts multiplying to show a high copy number, then because of ampicillin resistance gene, which is present in each and every plasmid, ampicillin resistance gene will produce proteins which will resist ampicillin. And ampicillin cannot kill the bacteria survives, and that is called as transformed. So now transformation is seen with the help of ampicillin resistance gene, which is called as a suitable marker. तो ये हो गया मार्कर जीन. इससे ये समझ में आ रहा है कि plasmid is replicating, and along with plasmid your gene of interest is replicating. जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट हो रहा है क्योंकि हमने वो भी प्लाज्मिड में डाला है बाय डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. तो हाउ डू यू नो जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट हो रहा है? जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट हो रहा है if the bacteria survives in ampicillin, then the marker gene, ampicillin resistance gene, proves that transformation has successfully taken place. So, what is the ampicillin resistance gene acting as a? The ampicillin resistance gene is a selectable marker. It's a good marker. Now, साथ में cloning sites होने चाहिए. In order to link the alien DNA, vector needs to have very few, preferably single recognition sites. तो एक अच्छा plasmid, say PBR32, it has got recognition site for EcoR1, for Clavin, for Hind3. EcoR1 का भी remember GAA-TTC और यहां पर भी GAA-TTC. तो ये recognition site है और G और A के बीच में EcoR1 will cut. तो ऐसा GAA-TTC यहां पर है, which is the recognition site for EcoR1. Similarly, Hind3 के लिए recognition site है, Clav1 के लिए recognition site है, BAMH1 के लिए recognition site है, SAL1 के लिए recognized site है, PST के लिए recognized site है, PVU के लिए recognized site है. ऐसे single recognition sites है, single recognition sites. Presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments which will complicate gene cloning. अगर EcoR1 यहां पर भी होता है and you have EcoR1 यहां पर भी कट करता है and EcoR1 यहां पर भी कट करता है, EcoR1 यहां पर भी कट करता है, तो चार recognition site हो गया. Then what will happen to the plasmid? Plasmid will break into one fragment, into second fragment, into third fragment, into fourth fragment. क्योंकि जैसे EcoR1 डालोगे, it will cut all the recognition sites और पूरा plasmid छोटे छोटे pieces में टूट जाएगा. So ऐसा plasmid नहीं होना चाहिए. It should have preferably single recognition site for the restriction enzyme. तो वो important होता है. And what is a good ligation? So ligation of alien DNA is carried on a restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene. For example, one gene for ampicillin and the other for tetracycline. For example, you can ligate a foreign DNA at BAMH1 site of tetracycline resistance gene in the vector PBR322. अब ये बहुत ध्यान से सुनना. We want to put gene of interest, gene of insulin. Gene of insulin you want to grow.
you will cut the BAM H1 site of tetracycline resistance gene in the vector PBR 322. So let's see. So ये है PBR 322 और यहां BAM H1 साइट है. BAM H1 साइट है. We use BAM H1 restriction enzyme, cut the plasmid, and here we put our gene of interest. So gene of interest is put over here. That is gene for insulin. Gene for insulin को यहां डाल दिया. So what will happen now? Check this here. So ये है बैक्टीरिया और ये है बैक्टीरियल डीएनए. If we put ampicillin over it, the bacteria will die. If we put tetracycline over it, the bacteria will die. Now, उस बैक्टीरिया के अंदर we introduce PBR 322 and उसका ओराई and बैक्टीरिया का ओराई, प्लाज्मिड और बैक्टीरिया का ओराई मैच हो रहा है. So now this plasmid starts undergoing replication और उसकी multiple copies बनने लगती है. Now you put over it ampicillin, then the PBR 322 has got ampicillin resistance gene and it has got tetracycline resistance gene. तो दोनों resistance gene है. So PBR 322 has got both ampicillin and tetracycline resistance genes. And once the ori of the bacteria and the ori of the plasmid match because of ampicillin resistance gene and because of tetracycline resistance gene, ampicillin डाला तो भी bacteria will survive. Tetracycline डाला तो भी bacteria will survive. So what have ampicillin and tetracycline both become? Selectable markers. And it means the bacterial ori and the plasmid ori are matching and multiple copies of the plasmid are made, and because of ampicillin resistance gene and because of tetracycline resistance gene, the bacteria is able to survive in ampicillin, survive in tetracycline, and the bacteria has undergone transformation. So, selectable markers prove that transformation has taken place. तो ये तो हमने already किया. Now what have we done? We have taken the PBR 322 and उसके प्लाज्मिड को बाहर निकाला and using BAM H1 enzyme, we cut the tetracycline resistance gene. Where is the BAM H1 restriction site found in? Tetracycline resistance gene. और उसके अंदर हमने कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां लाइगेट कर दिया. सो दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंसुलिन. इसको डाल दिया. दिस इज नाउ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और अ चाइमेरिक डीएनए. ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए और चाइमेरिक डीएनए, and this recombinant DNA is now put in the plasmid. So plasmid के अंदर अब है gene of interest in the tetracycline resistance gene. And now समझो ओराई और ओराई मैच हो रहे हैं. And this plasmid starts forming multiple copies. Multiple copies. तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. Was our recombination successful? हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, क्या वो जीन ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसफुली मल्टीप्लाई हो रहा है? Is the gene of interest found in all the successive bacteria?
सक्सेसिव बैक्टीरिया में क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है? फॉर दैट यू पुट एम्पिसिलिन. एम्पिसिलिन डालोगे, द बैक्टीरिया विल सर्वाइव. वो तुमने प्रूव किया था. इट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट. बट golden words, if we put tetracycline, then the bacteria will die. Bacteria will die. क्यों? क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को तो कट करके उसमें जीन ऑफ इंसुलिन डाल दिया. So we have done something called insertional inactivation of tetracycline resistance gene. हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया. We have inserted gene of interest, and that is called insertional inactivation of tetracycline resistance gene. अब tetracycline resistance gene से वो प्रोटीन बन नहीं सकता है जिस which will protect from tetracycline, because हमने जीन को डिसेबल कर दिया. क्योंकि हमने उस जीन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को डिसेबल कर दिया, उसकी पोटेंसी निकाल ली by putting gene of interest in it. So that is called insertional inactivation of tetracycline resistance gene. And if the bacteria dies in tetracycline, it means recombination was a successful recombination, which means in every plasmid, no matter what the copy number, gene of interest is multiplying. Gene of interest, gene for insulin, multiply हो रहा है. And because of insertional inactivation of tetracycline resistance, tetracycline के presence में the bacteria will die. So recombination is a successful recombination. So golden words: bacteria, only ampicillin, only tetracycline dies. Bacteria with PBr322 inserted in it, ori match and plasmid के multiple copies, high copy number मिलते हैं, then because of ampicillin resistance gene and tetracycline resistance gene, it survives in ampicillin, survives in tetracycline. That means it is a transformant, successful transformant. Now, after putting the gene of interest in tetracycline resistance gene using BAM H1 site, BAM H1 site से BAM H1 site से हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को कट करके उसके अंदर जीन ऑफ इंसुलिन डाल दिया. Now, when the bacteria is put in the with the plasmid, यह बैक्टीरियल डीएनए, ये है प्लाज्मिड डीएनए, और उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है. Then what will happen if gene of interest is multiplied? Then what will happen with ampicillin resistance gene? यह है हाई कॉपी नंबर. ampicillin resistance gene से प्रोटीन बनेगा which will help the bacteria to oppose ampicillin, and that protein will oppose ampicillin and the bacteria will survive. That is a successful transformation. So surviving an ampicillin proves it is a successful transformation. But when we put tetracycline, then tetracycline resistance gene के अंदर gene of interest आ चुका है. So we have caused insertional inactivation of tetracycline resistance gene, and this tetracycline resistance gene will not produce protein which will resist against tetracycline. तो tetracycline के presence में bacteria will die, which means recombination was a successful recombination. Golden words:
surviving in ampicillin proves that transformation took place, that oris were accepted. So, surviving in ampicillin, what does ampicillin resistance gene prove? That plasmid replicate हो रहे हैं, उसका high copy number मिल रहा है, and transformation is a successful transformation. But what happens when we put tetracycline? The bacteria dies because tetracycline resistance gene का insertional inactivation हुआ है, means our recombinant bacteria, our gene of interest is multiplying in the plasmid. हर एक copy cell में we are getting gene of interest. हर एक copy cell में gene of interest आ रहा है, and that means your recombination was a successful recombination. आपका recombination एक successful recombination है. So what is surviving in ampicillin proof? Transformation is successful transformation. What is dying in tetracycline proves that recombination is a successful recombination, and that insertional inactivation of tetracycline resistance gene has taken place. Now, this is a very cumbersome project. बहुत मेहनत वाला part है. So, we have got alternative selective markers which are based on the ability to differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. Now, in this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase, resulting in inactivation of the enzyme, which is called insertional inactivation. The presence of a chromogenic substrate gives blue color colony that does not have the insert, but once an insert is given, insertional inactivation of beta galactosidase takes place and the colony does not produce any color and are called recombinant colonies. अब ये लास्ट दो तीन स्टेटमेंट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहेंगे, अब समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. ये है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का कोई कलर नहीं होता है, नो कलर. नाउ वी पुट इन इट अ प्लाज्मिड, and that plasmid has got a gene encoding for an enzyme called beta galactosidase gene. Beta galactosidase gene is present in it. Suppose the ori of the bacteria and the ori of the plasmid match. That means the plasmid starts replicating और उसकी multiple copies बनती है. High copy number is there. तो हर एक plasmid के अंदर you will have gene for beta galactosidase. हर एक plasmid में gene for beta galactosidase आ जाएगा, which means transformation is successful. Transformation is successful. अभी ये आपको बाहर से कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ है? इस बैक्टीरिया के ऊपर आप एक कलरिंग एजेंट डालते हो, एक कलरिंग एजेंट डालते हो, एंड दैट कलरिंग एजेंट के ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल एक्ट, and coloring agent पे beta galactosidase act करेगा and it will produce a chemical called delphinine, and delphinine gives a blue color. So beta galactosidase gene, if plasmids are replicating, then beta galactosidase gene helps the chromogenic substrate to produce delphinine, which gives blue color colonies. अगर blue color colonies आई, that means transformation is successful. It means
It is a successful transformation. So that is successful transformation. Getting blue color colonies proves it is a successful transformation. Now what do we do? उसी बैक्टीरिया के अंदर, उसी प्लाज्मिड के अंदर we cut the beta galactosidase gene और उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया. तो जीन ऑफ इंटरेस्ट is put in the beta galactosidase gene. So now what have we done? We have caused insertional inactivation of the beta galactosidase gene. अब insertional inactivation of beta galactosidase gene. अब बीटा गैलेटोसाइडेज जीन से बीटा गैलेटोसाइडेज नहीं बनेगा, रादर जीन ऑफ इंटरेस्ट, so gene of insulin will produce insulin, insulin बनेगा, but beta galactosidase नहीं बनेगा. Now if we put the chromogenic substrate, then what will happen? It will not have beta galactosidase, no beta galactosidase, तो delphinine नहीं बनेगा, delphinine नहीं बनेगा, and that means blue color नहीं आएगा, there will be white color colonies. White color colonies will be produced, which means gene of interest is successfully multiplying with all the bacteria. And all bacteria have gene of interest. And हर एक बैक्टीरिया के अंदर बीटा गैलेटोसाइडेज जीन का insertional inactivation हुआ है. Insertional inactivation of beta galactosidase gene means no beta galactosidase is produced and chromogenic substrate का delphinin नहीं बनता है, तो white color की colony आती है. And that means your recombination is a successful recombination. Recombination is a successful recombination. So golden words. What will happen अगर बैक्टीरिया के अंदर हमने जीन फॉर बीटा गैलेटोसाइडेज वाला प्लाज्मिड डाल दिया, समझो ओराई और ओराई मैच हुआ एंड प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपीज बनी, हाई कॉपी नंबर, then gene for beta galactosidase is found in each plasmid, and that means transformation has taken place. और उसका प्रूफ क्या है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला तो बीटा गैलेटोसाइडेज कन्वर्ट्स द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इनटू डेल्फिनिन एंड गिव्स अ ब्लू कलर कॉलोनी. तो ब्लू कलर कॉलोनी आई, दैट मींस प्लाज्मिड का ओराई ओराई मैच हो गया, प्लाज्मिड का हाई कॉपी नंबर मिला एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन. सो उससे ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लू कलर कॉलोनी से ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ, ब्लू कलर कॉलोनी से ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ. नाउ वी नो ट्रांसफॉर्मेशन तो सक्सेसफुल है, तो उसी के अंदर बीटा गैलेटोसाइडेज जीन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया एंड ओराई ओराई तो मैच हो रहा था, वो तो हमने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूव कर लिया. नाउ क्या रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हुआ है? तो अगर प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर एक प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट मींस जीन ऑफ बीटा गैलेटोसाइडेज has undergone insertional inactivation. बीटा गैलेटोसाइडेज नहीं बनेगा और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से डेल्फिनिन नहीं बनेगा और नो डेल्फिनिन विल प्रोड्यूस व्हाइट कलर कॉलोनीज, which means recombination is a successful recombination. So I hope you have understood. Getting blue color colony proves that transformation is successful, which means plasmid मल्टीप्लाई हो रहा है, ओराई
मैच हो रहा है, हो रहा है, मैच हो रहा है, प्लाज्मिड के हाई कॉपी नंबर आ रहे हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ, means the bacteria has accepted the plasmid and plasmid is multiplying and जीन ऑफ इंटरेस्ट को बीटा गैलेटोसाइडेज जीन के अंदर डाल के अगर उसका मल्टीपल कॉपीज बन रहा है और जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट हो रहा है, दैट मींस बीटा गैलेटोसाइडेज जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ एंड नो बीटा गैलेटोसाइडेज इज मेड, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का डेल्फिनिन नहीं हो रहा है, व्हाइट कलर कॉलोनी आ रही है, which means recombination, successful recombination हुआ। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बार पूछते हैं which enzyme is used for finding recombinants and non-recombinants of beta galactosidase? What will appearance of blue colonies prove transformation is successful transformation? What will white color colonies prove that recombination is a successful recombination? Why did recombination successfully take place? Because we have caused insertional inactivation of beta galactosidase gene. Beta galactosidase gene का insertional inactivation किया है। इस तरह से हम लोग एक क्लोनिंग वेक्टर को समझते हैं। सो क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने देखा? इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन which also supports high copy number. It should have selectable marker which will help in knowing transformance and also knowing ट्रांसफॉर्मेंस के साथ साथ we will also know ट्रांसफॉर्मेंट भी एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन से है and recombinant by tetracycline resistance gene. So transformant by ampicillin resistance gene, recombinant by tetracycline resistance gene. Similarly, यहाँ पर भी बीटा गैलेटोसाइडेज से ब्लू कलर आता है प्रूव्स ट्रांसफॉर्मेशन और उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से व्हाइट कलर कॉलोनी आती है रिकॉम्बिनेशन। ये क्लोनिंग वेक्टर में हमने यूज किया एंड इट शुड सपोर्ट have few preferably single recognition sites, एक एक recognition site होनी चाहिए for the enzymes to break and put in the gene of interest. Not multiple sites but a single site should be there along with ori. तो ori होना चाहिए, you should have ori, origin of replication, that supports high copy number. You should have ampicillin and tetracycline resistance gene that are markers. Markers hai. One of it can prove transformation. The other by insertional reactivation can prove recombination. And there should be single recognition sites for the restriction enzymes. These are the three prerequisites for a good cloning vector. Chalo, tough part. I hope you've understood this.